Assalamu alaikum students. I hope you are fine and in good spirits. Previously, we studied your first lesson, Pakistan and the Modern World by Liaquat Ali Khan. I hope you have understood the lesson and the important questions, and you have solved the exercise question that was given to you. Today, we will start your second lesson, that is the Eclipse, that was written by Virginia Woolf. Virginia Woolf, English novelist, essayist, and critic, has beautifully portrayed the natural phenomena of eclipse. तो इक्लिप्स जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना है, वो नेचुरली अकर करता है और वर्जीनिया वुल्फ ने उसे बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है, एक्सप्लेन किया है. शी हैज़ ऑल्सो एनलाइटन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सन. उसने इसके साथ साथ हमें ये भी इन्फॉर्म इससे चीज़ को भी इन्फॉर्म किया है या हाईलाइट किया है कि सन हमारे लिए या लाइफ के लिए अर्थ पे कितना इम्पोर्टेंट है. She has narrated the essay dramatically and has regarded Sun as an actor that was going to come on the stage to perform as if a drama was going on. उसने इस ऐसे को इस तरीके से लिखा है कि जैसे कोई ड्रामा परफॉर्म हो रहा हो और सन जो है वो एक एक्टर हो जिसने स्टेज पर आना हो और अपना रोल प्ले करना हो. द स्काई सर्व्ड एज अ स्टेज, और स्काई को उसने ऐसे प्रेजेंट किया है जैसे वो एक स्टेज हो. जो पूरे का पूरा ऐसे इस तरह से परफॉर्म लिखा गया है कि जैसे सन एक परफॉर्मर हो और उसने अपना रोल स्काई में आके परफॉर्म करना हो. She has made the scene vivid and ravishing by the usage of colors, images and similes. Vivid means बहुत ज़्यादा क्लियर, ravishing वो जिसे आप देख के बहुत ज़्यादा आपको खूबसूरत लगे. Similes मतलब मिसालें देना, कोई भी दो चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर करके उनकी मिसाल देना. तो उसने क्या किया है कि पूरे के पूरे सीन को बहुत क्लियर बना दिया है, हमारे लिए बहुत खूबसूरत बना दिया है. किसको इस्तेमाल करके? कलर्स को, इमेजेस को और सिमिलीज को. The way she has described it is so highly colored and realistic that the readers visualize the eclipse to be occurring before their eyes. People were anxiously going towards a hilltop from where all would view the sun with reverence. तो राइटर ने ऐसे को कैसे स्टार्ट किया? उसने बताया कि तमाम के तमाम लोग एक हिल टॉप की तरफ जा रहे थे जहाँ पे उन्होंने सन को देखना था. रेवरेंस मीन्स पूरी अकीदत के साथ, और वो बहुत ज़्यादा एंक्शस थे, टेंस थे, वो बहुत ज़्यादा पुरजोश थे इस पूरे इवेंट को, यानी इक्लिप्स के इवेंट को देखने के लिए. People had gathered on the hilltop and stood in a straight line that it seemed they were statues standing on the edge of the world. लोग हिल टॉप पे पहुंच गए तो वो ऐसे खड़े हो गए एक लाइन में, बिल्कुल स्टैचूज की तरह. वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहे थे, से लग रहा था जैसे वो एज ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के किनारे पर खड़े हों. एज द सन रोज क्लाउड्स ग्लोड अप. ऑब्वियसली जब सन निकला तो उसके साथ जो आसमान पे जो बादल थे, जो क्लाउड्स थे, वो चमकना शुरू हो गए. दे स्टार्टेड ग्लोइंग. लाइट ग्लीम्ड एंड पियर्ड ओवर द रिम ऑफ द क्लाउड्स. लाइट चमक भी रही थी और पियर मतलब झांकना. तो वो जो क्लाउड्स के जो किनारे थे, रिम्स थी, वो वहां से झांक झांक के देख रही थी. ऐसे लग रहा था जैसे वहां से निकल के वो देख रही हो. The sun raced towards the point where eclipse had to take place. ऐसे लग रहा था जैसे सन को भी जल्दी हो उस जगह तक पहुंचने की जहां पे इक्लिप्स आना है, इसलिए वो जल्दी जल्दी और तेजी के साथ उस पॉइंट की तरफ जा रहा था. बट द क्लाउड्स वर इम्पीडिंग इट. इम्पीडिंग का मतलब होता है रोकना किसी चीज़ को. तो ऐसे लग रहा था जैसे क्लाउड्स उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हों. The sun with a tremendous speed endeavored to escape the mist. ट्रिमेंडस बहुत ज़्यादा शानदार, एंडेवर्ड यानी कोशिश की. तो सन ने कोशिश की पूरी ताकत लगा के, पूरी स्पीड के साथ, कि वो इस मिस्ट या धुंध में से निकल सके. एट सम पॉइंट इट केम फोर्थ, देन अगेन वॉज श्राउडेड बाय द फ्लीसी क्लाउड्स. फ्लीसी मीन्स बिल्कुल ऊन की तरह. तो कभी वो उन बादलों के पीछे से निकल आता था और कभी वापस उन बादलों के पीछे छुप जाता था. Shroud means cover हो जाना. The sun then appeared hollow as the moon had come in front of it. तो इसके बाद ऐसे लगने लगा जैसे सन अंदर से खाली हो रहा हो, क्योंकि मून जो है वो उसके बिल्कुल सामने आ गया था.
A substantial proportion of the sun was covered and the loss of daylight became noticeable. आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एक सब्सटेंशियल यानी अच्छा खासा जो पोर्शन था सन का वो मून से कवर हो गया और डे लाइट बहुत कम महसूस होना शुरू हो गई। हालांकि दिन था, दिन में सूरज की रोशनी होती है, लेकिन इक्लिप्स की वजह से सूरज की रोशनी बहुत मध्यम या कम हो गई थी। The writer has efficaciously described the sun's efforts to break free from the cloudy hurdle. Efficaciously means बहुत efficient way में, बहुत बेहतर तरीके से। वो किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है? सन की एफर्ट्स को कि वो क्लाउड्स के पीछे से या इस इक्लिप्स के पीछे से निकलने के लिए कितनी कोशिश कर रहा है। उसने उसको ऐसे पोर्ट्रे किया है, ऐसे पिक्चराइज किया है जैसे वो कोई कैद हो और सन उस कैद से निकलने की कोशिश कर रहा हो। She has continuously personified sun as it was putting its best efforts to make its face appear before the world. Personify का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इंसानी खसूसियात देना। तो उसने सन को इंसानी खसूसियात दी हैं, जैसे वो भाग रहा है, जैसे वो निकलने की कोशिश कर रहा है, जैसे वो दुनिया के सामने आने की कोशिश कर रहा है, जैसे वो सोचने और समझने की सलाहियत रखता हो। The clouds were shifting, stifling the sun's speed. Clouds की वजह से जो sun है उसकी speed कम हो रही थी. The sanctified 24 seconds had begun, but still the sun was entrapped and was striving to disencumber itself from the clump of clouds. सेंटिफाइड मतलब वो जो फिक्स्ड 24 सेकेंड्स थे जिनके लिए इक्लिप्स रहना था और उसके बाद इक्लिप्स को ख़त्म हो जाना था, वो शुरू हो चुके थे, लेकिन सन फिर भी लग रहा था कि वो ट्रैप्ड हो और स्ट्राइव कर रहा हो, यानी कोशिश कर रहा हो अपने आप को डिसएनकम्बर यानी अपने आप को छुड़ाने की उन बादलों के झुंड से, क्लम्प से। ऑफ द 24 सेकेंड्स ओनली 5 रिमेन्ड, उन 24 सेकेंड्स में से सिर्फ 5 सेकेंड्स रह गए। एंड स्टिल ही वॉज ऑब्सक्योर्ड, ऑब्सक्योर मतलब छुपा हुआ, तो अभी भी जो सन था वो छुपा हुआ था। The time of the eclipse was passing and it seemed that the sun was losing. अब eclipse का टाइम गुजरता जा रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे सन ये जंग हार गया हो और अब वो कभी इस eclipse से बाहर नहीं निकलेगा। It was continuously obliterated by the clouds. Obliterate का मतलब होता है छुप जाना, गुम हो जाना। So clouds की वजह से सूरज पूरी तरह से छुपा हुआ था। The colors of the valleys seemed to disappear. बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे वैलीज में सब कलर्स गायब हो चुके हों, डिसअपियर हो गए हों। Everything was fading as all the color began to go from the moor. moor यानी घास का मैदान। तो वो जिस मैदान पे, जिस पहाड़ी पे वो लोग मौजूद थे, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ से सारे के सारे कलर्स फेड हो गए हों। द कलर्स वर चेंजिंग, कलर्स चेंज भी हो रहे थे। द ब्लू टर्न टू पर्पल, ब्लू डार्क होके पर्पल लगने लग गया। द वाइट बिकेम लिविड एज एट द अप्रोच ऑफ अ वायलेंट बट विंडलेस स्टॉर्म। वाइट बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे कि बहुत तेज़ तूफान आ रहा हो लेकिन उसकी कोई आवाज़ ना हो, तो जब रंग चेंज हो जाते हैं उसी तरह से सफ़ेद रंग या वाइट कलर लिविड हो गया यानी धुंधला हो गया। पिंक फेसेस वेंट ग्रीन, लोगों के चेहरे जो पिंक थे वो सनलाइट के मौजूद ना होने की वजह से, उसकी एब्सेंस की वजह से दे लुक्ड ग्रीन। एंड इट बिकेम कोल्डर देन एवर। इवन क्योंकि अर्थ के ऊपर जो हीट है वो सन से आती है, तो सनलाइट के ना होने की वजह से हर चीज़ ज़्यादा कोल्ड फील होना शुरू हो गई। द लाइट एंड वार्मथ वर वैनिशिंग, तो सन के ना होने की वजह से अर्थ से लाइट भी ख़त्म हो रही थी और वार्मथ भी ख़त्म हो रही थी। द पीपल फेल्ट दैट समथिंग मोर हैड टू हैपन, लोगों को ऐसे फीलिंग आ रही थी जैसे अभी कुछ और होने वाला हो। The shadow growing darker and darker over the moor was like the heeling over of a boat, which instead of righting itself at the critical moment turns a little further and then a little further on its side and suddenly capsizes. So अब राइटर ने किस चीज़ की एग्जाम्पल यूज़ की है? एक बोट की जो समुंदर पे जा रही होती है और एक तरफ झुकना शुरू हो जाती है और ख़ास आखिरी लम्हे पर बजाय सीधा होने के मज़ीद झुकती जाती है और कैप्साइज हो जाती है यानी डूब जाती है। तो उसको भी ऐसे लग रहा है जैसे सूरज भी उस बोट की तरह हो जो आखिरी लम्हे पे वापस सीधा होने की बजाय डूब गया हो। Moon's shadow swept over the face of the earth. The visible crescent of the sun decreased in width until the two disks reached their
Moon's shadow swept over the face of the earth. The visible crescent of the sun decreased in width until the two disks reached their closest approach. Thus, that was the moment of maximum phase and thus it became totally dark. So, क्या हुआ कि मून का जो शेडो था वो पूरी तरह अर्थ के ऊपर फैल गया और हमें मून नजर और उन्हें सन नजर आना बंद हो गया। और ये वो टाइम था जिसको हम मैक्सिमम फेज कहते हैं जिसमें अर्थ पूरी तरह से डार्क हो जाती है। Oh dark amid the blaze of noon, irrecoverably dark, total eclipse, without all hope of day. The flesh and blood of the world was dead, only the skeleton was left. सो राइटर का कहना है कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे अर्थ एक जिस्म हो जिसमें फ्लैश और ब्लड ख़त्म हो गए हों और सिर्फ उसका स्केलेटन यानी ढांचा बाकी रह गया हो क्योंकि अर्थ का जो फ्लैश और ब्लड है वो सन की वजह से है और सन के एब्सेंस में उसका फ्लैश और ब्लड दोनों ख़त्म हो गए। Earth had lost all its splendor, it was totally dead. Then gradually the genuflection of light to the darkness began to over and degradation of the grandeur ended. जेनोफ्लेक्शन मीन्स जब आप घुटनों के बल किसी के आगे झुकते हैं तो उसने कहा कि जो लाइट जो डार्कनेस के आगे झुक रही थी जेनोफ्लेक्ट कर रही थी वो ओवर हो गया और आहिस्ता आहिस्ता जो सन का जो ग्रैंडर था जो उसकी शान शौकत थी वो वापस आ गई। After maximum phase, the crescent of the sun widened again until the moon passed out of the sun's disk. So maximum phase के बाद moon ने sun के आगे से हटना शुरू किया और sun का size बड़ा होता चला गया यहाँ तक कि sun पूरी तरह से visible हो गया। Then slowly light began to spread everywhere. एवरीथिंग वॉज रिकुपरेटिंग। रिकुपरेट का मतलब होता है बीमारी से सेहतयाब होना। तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हर चीज़ किसी बीमारी का किसी डिजीज़ का शिकार हुई हो और अब उसमें दोबारा से जान पड़ना शुरू हो गई हो। द कलर्स वर रिटर्निंग। Earlier, when the sun had totally disappeared, Earth had lost all its glamour. अर्थ का जितना भी ग्लैमर था उसकी अट्रैक्शन थी वो सब की सब डिसअपियर हो गई थी। Why? Because sun was not there. The people who were standing on the hill and impatiently gazing the sky felt that the earth was a hollow framework, a fragile shell. Fragile means नाजुक. So वो लोग जो हिल पे खड़े थे और वो इस सारे सीन को ऑब्जर्व कर रहे थे दे फेल्ट कि जो अर्थ है वो एक फ्रेजल शेल है, वो एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर जो सब्सटेंस है या जो जान है वो सिर्फ और सिर्फ सन की वजह से है। It could even have blustered. अर्थ कह सकती है कि वो शानदार है लेकिन उसकी सारी शान उसकी सारी मैग्निफिसेंस सन की वजह से है। बट स्टेडली द फियर गॉट मिटिगेटेड। मिटिगेट का मतलब होता है कम होना। एंड द पीपल एंड देयर फेथ गॉट फर्म्ड एज एवरीथिंग वाज बिकमिंग ब्राइटली पेंटेड। Then the world appeared to be full of life. Everything could be viewed clearly. So क्यों हर चीज़ लाइफ फुल ऑफ लाइफ लग रही थी क्योंकि हर चीज़ साफ और वाजे नज़र आ रही थी। तो डार्कनेस में जब चीज़ें वाजे नज़र नहीं आ रही थी वो they looked lifeless but now they were looking full of life. The earth then gave the impression of vivacity. Vivacity means जान होना, जोशो जज्बा होना। Thus, the episode of Eclipse, from beginning to end, has been unfolded in a style to deepen the impression which exhibit naturalness throughout the anecdote. So, जो पूरा किस्सा है उसमें सन अर्थ और सोलर इक्लिप्स को इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि उस पूरे फेजेस की नेचुरलनेस भी मेंटेन रहे और एक ऐसा स्टाइल भी हो जो एक स्टोरी की तरह हो। Now would like to show you a video that will help you to understand what solar eclipse is and how it takes place. I hope you will enjoy the video and understand it. If you have any questions regarding the lesson, don't hesitate to ask. A solar eclipse happens when a new moon moves between the Earth and the Sun, blocking some or all of the Sun's rays from reaching the Earth. By cosmic chance, even though the Sun is 400 times wider than the Moon, it's also 400 times farther away. Therefore, the two objects appear the same size in our sky.
Astronomers are able to predict eclipses because the Earth and Moon have very predictable orbits. Why then isn't there an eclipse every month? The Moon's orbit is usually tilted a few degrees north or south in relation to the Earth. When the Moon does eclipse the Sun, it casts two types of shadows on Earth: a smaller, darker shadow known as the umbra, and a larger shadow known as the penumbra. There are four types of solar eclipses. The first and most spectacular is a total eclipse, when the Moon completely covers the Sun's surface. A total eclipse can only be seen if you're standing within the umbral shadow. That's why the imaginary line created by this shadow as it races across Earth is known as the path of totality. People within the penumbral shadow see only a partial eclipse, the second type. From this view, outside the path of totality, the Moon passes in front of the Sun off-center, never fully covering its surface. Third, an annular eclipse occurs when the Moon passes directly in front of the Sun. However, unlike a total eclipse, the Moon appears too small to fully cover the Sun. The Moon's orbit is elliptical, so sometimes it's closer to Earth and sometimes it's farther away. Last, a hybrid eclipse is when the Moon's position between the Earth and Sun is so finely balanced that the curvature of the Earth plays a role. The Moon will be farther away from some parts of Earth along the eclipse's path, resulting in an annular eclipse. In other parts, the Moon will be just close enough to fully cover the Sun, resulting in a total eclipse. While a total solar eclipse happens somewhere on Earth every year or two, any given point on Earth experiences the event only about once every 400 years. We interrupt this video for an important safety announcement. Looking directly at the Sun, even during an eclipse, can cause permanent eye damage. Fortunately, there are ways to enjoy an eclipse safely. The easiest is to use certified eclipse watching glasses, which are shaded thousands of times darker than typical sunglasses. You can also look at the eclipse indirectly by making a pinhole viewer. Simply poke a small hole in a piece of cardboard. Hold the cardboard up to the Sun, allowing the Sun's image to be projected onto a flat surface. Be sure to look only at the surface and not through the cardboard. Just before the Moon completely covers the Sun, low-lying valleys on the Moon's edge will be the only spots that sunlight continues to pass through. These remaining brilliant shafts of light, known as Bailey's beads, will disappear one after another. And finally, a single bead of light remains, known as the diamond ring, signaling that you're just seconds away from experiencing totality. Once the last bead disappears and the Moon completely covers the Sun's surface, the view through your eclipse glasses will be pitch black. Totality achieved. At this point, none of the Sun's rays are reaching your eyes, and it's the only time that it's safe to take off your glasses. Remember to put your eclipse glasses back on before any of the Sun's rays start to peek through again. Any sunlight reaching your eyes, even for a few seconds, can cause serious damage. While an eclipse can last a few hours, totality typically occurs for less than 3 minutes. Animals and plants have also been known to alter their behavior during a total eclipse. Songbirds may stop singing, crickets may start chirping, and flowers may even start to close up. We won't always be able to see total solar eclipses. The Moon moves about 1.5 inches away from Earth each year. It's estimated that in about 1 billion years, the Moon will be too far away from Earth